Students, I am going to discuss example of the topic motion of connected bodies on page number 5.36, that is example number 9. Three bodies A, B, C, each of mass m, are hanging on a string over a fixed pulley. What are the tensions in the string connected bodies A to B and B to C? It is clear from this figure that the acceleration of body A is in the upward direction and the acceleration of body B and C is in the downward direction. Now the tension in the string connecting bodies A to B. Now the weight of body A is acting vertically downward, that is mg. So if the body A going in the upward direction, अगर body A ने upward जाना है according to this figure here, this figure represents the acceleration of body A is in the upward direction. So in that case T1, that is tension T1, is greater than the mg, that is weight of body A. So T1 minus mg is equal to ma. Here A represent the acceleration of this body. Clear? Now the tensions in the string connected bodies B and C. So अगर हम इस पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे बॉडी का बी बॉडी का मास क्या है m, सी बॉडी का मास क्या है m. अब इसका भी जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका भी वेट वर्टिकली यहाँ से डाउनवर्ड को एक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड को एक्ट करेगा, ठीक है. अब बॉडी नीचे को आ रही है तो इफेक्ट ऑफ वेट शुड बी ग्रेटर दैन दिस टेंशन T1. अगर इस पर्टिकुलर की बात करें टेंशन T1 की, तो इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी B एंड C शुड बी ग्रेटर दैन द टेंशन T1. सो दैट्स वाई m plus mg, here m represent the mass of body B and another m represent the mass of body C into g, that is the weight of these two bodies, that is m plus m into g minus tension, that is T1, is equal to total mass is m plus m into acceleration, that is A, with which the bodies B and C are moving downward. Clear? So from here we get 2 mg minus T1, which is equal to ma. Clear? So it can also be written as minus T1 plus 2 mg is equal to 2 ma. Take this equation number 2. Now for this part, between the part B and C. अब इस part में अगर चेक करें, ठीक है, अब T2 tension is acting in the upward direction and the weight of body C is acting in the downward direction. So body ने अगर downward आना है तो then the effect of weight should be greater than the tension T2. So mg minus T2 is equal to ma. Take this equation number 3. Students, इस जो मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडी की जो हम जितनी भी एग्जांपल्स करेंगे उसमें हर एक जो बॉडी है उसकी जो मोशन है या उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, या टेंशन लग रही है या वेट है, वो भी एक टाइप की फोर्सेस ही होती हैं. तो हमने उन सारी जो फोर्सेस हैं वो इंडिविजुअल बॉडी पे लगा के इंडिविजुअल ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. क्लियर? सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने T1 को कंसिडर किया, जो T1 अपवर्ड जा रही है और टोटल वेट B और C का कंबाइंड करके लिखा जो डाउनवर्ड को एक्ट कर रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 इक्वेशंस आ गई. सो व्हेन वी ऐड इक्वेशन नंबर दिस 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, so when we add these two equations, so here T1 is cancelled out with this T1, so we get mg is equal to 3 ma. The value of acceleration is equal to g by 3. Now put the value of acceleration, that is g by 3, in equation number 1. So we get T1 minus mg is equal to mg by 3. So the T1 is equal to mg by 3 plus mg. So take mg common. So we get T1 is equal to mg within bracket 1 by 3 plus 1. So T1 is equal to mg within bracket 1 plus 3 by 3. So the value of T1 is 4 by 3 mg. Clear? So similarly
when we put the value of acceleration g by 3 in equation number 3, so we get mg minus t2 is equal to mg by 3. So mg minus mg by 3 is equal to t2. So when we take mg common, we get within bracket 1 minus 1 by 3. So mg is equal to 3 minus 1 by 3, which is equal to t2. So the value of t2 is 2 by 3 mg.